All right, G. So let's start with the normalization task one. It said that you're working for Tawara Technology Solutions, TTS. You're required to carry out some data handling and media tasks. You must use the most efficient method to solve each task. And you're required to complete the evidence document called evidence.rtf. ठीक है जी, इसने हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया. साथ ही साथ रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलें तो all files must include your center number, candidate number. The format is given. Point number one. A manufacturing company needs a single central database and has gathered the details of staff employed at each site. ठीक है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको एक सेंट्रल डेटाबेस चाहिए और उसने गैदर की हैं डिटेल्स ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड एट ईच साइट. नाउ अनफॉर्चुनेटली the sites saved the details in different ways. So ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है जब आप एक ही जगह पे बैठ के अपने डिफरेंट लोकेशन से डेटा मंगवाते हैं, तो अनलेस अनटिल यू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो दूसरी लोकेशंस होती हैं वो आपको किसी भी फॉर्मेट में जम्बल्ड अप डेटा जो है वो भेज सकती हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. दे वांटेड टू मेक अ सेंट्रल डेटाबेस एंड they wanted data from each site. जो different जगहों पे उनकी जो ऑफिसेस कह लो, वहां से डेटा आया और वहां पे हर ऑफिस ने अपने हिसाब से डेटा उनको भेजा है. ठीक है. You have been provided with these files: Ashford site job codes, Bolton site job codes, Cardiff site staff, Dundee or Dundee, right? I would say Dundee site job codes, all employees personal info, site info, job codes description.rtf. So these files are already given to you. वो कहता है कि जी you are required to develop a database consisting of 3 related tables containing the data for the employees, site details, description of the job codes. सिर्फ आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि दे वांट टू हैव अ डेटाबेस जिसमें ये 3 चीजें जो हैं वो आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए, या ये 3 मेन आपकी फाइल्स होनी चाहिए, जिसके अंदर एक है डेटा फॉर द एम्प्लॉइज. एक फाइल होगी जो कि एम्प्लॉइज का डेटा होगा, एक फाइल होगी जो कि साइट की डिटेल्स होंगी, और एक फाइल होगी जिसमें जॉब कोड्स होंगे या डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब कोड्स होंगे. ठीक है, हो गया. ओपन द फाइल्स, एनालाइज द डेटा. सारी फाइल्स को खोल के देखना है, एनालाइज करना है. इन ऑर्डर टू प्लान द रिलेशनल डेटाबेस, complete a data dictionary in the evidence document provided. Include details of the tables, records, fields, data types, and any other relevant information. There must be no duplication of data. ठीक हो गया. Just to start off with, data dictionary is basically a rough draft of your final database. Data dictionary is a rough draft of your final database. उस दिन क्लास में मैंने आपको कहा कि इसको आप नॉर्मलाइज भी कर लो और आप इसको इंपोर्ट भी कर लो और रिपोर्ट भी बना लो. ठीक है. हालांकि दिस पर्टिकुलर सिनेरियो does not talk about normalization. ठीक है. This scenario is about analyzing the data, making a data dictionary, and then following it up with a database, and at the end you are required to create the report. देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा
ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज कर लें और देखें आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, ऑल इन ऑल अगर बात करें अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, तो जस्ट बाय रीडिंग ऑफ फ्रॉम द पेपर आई कैन वेरी इजीली से कि यार डेटा नॉर्मलाइज करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का उसने सिनेरियो रखा है उसके अंदर मोर लेस नॉर्मलाइजेशन इजंट रिक्वायर्ड। हाँ, आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन द सिनेरियो इटसेल्फ। और सिनेरियो ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक सेंट्रल डेटाबेस बनानी है और उसने अपनी डिफरेंट साइट से डेटा मंगवाया ताकि वो डेटाबेस बना सके। डेटा जो उसको रिसीव हुआ है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में है, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा या जो भी है उसके साथ मसले मसाइल, उसको वो डेटा रिसीव होगा है, आपने उसको एनालाइज करना है। आपने सोचना है कि मैं इसके अंदर से एम्प्लॉयज़ का डेटा, साइट का डेटा और जॉब कोड्स का डेटा सेपरेट रखना है और साथ में मैंने उसको एक सेंट्रल डेटाबेस की शक्ल भी देनी है। लेकिन ये सब काम करने से पहले मुझे डेटा डिक्शनरी को फॉर्म करना है। आर वी ऑल फॉलोइंग दिस? जी सर। अच्छा जी, सो मैंने आपको अभी ये कहा कि भाई डेटा डिक्शनरी जो होती है वो एक रफ ड्राफ्ट होती है डेटाबेस के लिए। डेटाबेस क्या है? जो आप एक्सेस में बनाएंगे, ठीक है, द फाइनल फॉर्म ऑफ योर डेटाबेस व्हेन यू एक्चुअली नो व्हाट टू इंपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट, ठीक है, रिलेशनशिप्स क्या बनेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन कर रहे होते हो आप, लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आप इसको किस तरह एग्जीक्यूट करोगे, इसको आप किस तरह एक्सेस में ट्रांसलेट करोगे। उसके लिए आपको डेटा डिक्शनरी बनानी होती है। और डेटा डिक्शनरी आप इस फॉर्म में बनाते हैं या इस तरह की बनाते हैं कि बेस्ड ऑन योर डेटा डिक्शनरी आप सेम टू सेम डेटाबेस अपनी फॉर्म करते हैं। अब चाहे आपके पास सपोर्टिंग फाइल्स एक हो, दो हो, 10 हो, by looking at your data dictionary you should be able to form your database in Microsoft Access, period। ये समझ आ गई बात की? इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि भाई जो आपके पुराने सिनेरियोज थे जिनमें आपको टेबल्स दिए होते थे या आपको फाइल्स दी होती थी और आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन गिवन होती थी कि ये वाली फाइल जो है वो ये टेबल बनेगी, उसमें ये प्राइमरी की होगी, ये डेटा टाइप होगी, जस्ट लाइक दैट आपकी डेटा डिक्शनरी आपने खुद बनानी है। बजाय इसके कि एग्जामिनर आपको दे, आपने डेटा डिक्शनरी खुद से बनानी है। सो आई कैन से वेरी कन्वीनियंटली दैट डेटा डिक्शनरी इज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव डन ऑलरेडी और यू हैव गॉन थ्रू इट ऑलरेडी। हाँ, उसको फॉर्मली कैसे करते हैं एग्जाम के लिए तो वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फाइल्स। मेरे पास एक फाइल है ऑल एम्प्लॉइज पर्सनल इन्फो की। लेट्स ओपन दैट। वी आर गोइंग टू बेस्ट फिट दिस फाइल। ठीक है, so we have a payroll number, given name, family name, street address, city count, city town, postcode, date of birth, date of employment। ठीक हो गया। Let's open the other Ashford job site। Ashford site job codes। So we have a payroll number, site, job code, contract hours, date of employment, given name, family name, date of birth. Fine. Bolton, payroll number, site,
job code, contract hours, date of employment, given name, family name, date of birth. Fine. Cardiff, again, payroll number, site, job code, contract hours, date of employment, given name, family name, date of birth. डंडी से जो रिसीव हुई है दैट इज बेसिकली इन द वर्ड फाइल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली कॉपी करेंगे, एक्सेल में आएंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, यहां पे डेटा पेस्ट कर देंगे. So we have the payroll number, site, job code, contract hours, date of employment, given name, family name, date of birth. Fine. So हमें ये वर्ड की फाइल नहीं चाहिए. ठीक हो गया. जॉब कोड डिस्क्रिप्शन, हमारे पास अगेन एक वर्ड की फाइल है, हम इसका डेटा जो है वो कॉपी करेंगे, एक्सेल में आएंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसका डेटा भी पेस्ट कर लेंगे. सो वी हैव जॉब कोड, जॉब डिस्क्रिप्शन, and last of all we have the site info. बेटा जी अभी तक फॉलो किया जो मैंने किया? Yes, sir. अच्छा, what is the first step that I should look at before doing anything? सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? Sir, headings check करनी चाहिए. Very nice, very nice, superb. सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको जो फील्ड नेम्स है ना उनको कंसिस्टेंट बनाना है इन ऑल फाइल्स. ठीक है. सो हमारे पास साइट है सामने, सो साइट आई वुड से address underscore 1, I would say address underscore 2, town or city is fine, postcode is again the format that I'm following, office telephone number, office fax number. So this is perfectly fine. दूसरी फाइल में आते हैं, जॉब, अगेन जॉब कोड, सो अंडरस्कोर कोड, जॉब डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन. ठीक हो गया. अच्छा, साथ ही साथ ना मैं एक और चीज कर रहा हूं, और वो ये कि आई विल सेलेक्ट दिस, आई विल गो टू माय कस्टम सॉर्ट, my data has headers, I will sort it by the site and I click on OK. So मैंने इसको alphabetical order में भी sort कर दिया. इसी तरह मैं job में आता हूँ, मैं select करता हूँ, I'll go to my custom sort, data has headers, sort by job code, the order is alphabetical, now I will just click on OK. So not only I am renaming the field names, I'm also sorting them based on their most probable primary keys. Site के अंदर या site की फाइल के अंदर मुझे site seem to be the primary key, और jobs की फाइल में the job seems to be the primary key. Are we all following this? Yes, sir. आ जाओ आगे. सबसे पहले जी all employees personal info, payroll number. Okay, payroll number needs to be payroll underscore number, given name needs to be given underscore number, name, family name family underscore name, street address
street underscore address, city town is okay, postcode, post underscore code, date of birth, underscore underscore birth, date of employment, underscore underscore employment, and E is also going to be capital. ये मेरा हो गया all employees का field name settle. और अब मैं क्या करूंगा, डेटा को सेलेक्ट करके I will go to my custom sort. My data has headers based on the most probable primary key, which seems to be the payroll number. I will sort this into alphabetical order. Are we clear up till here? Yes, sir. अच्छा जी, इसी तरह मैं एशफोर्ड में आता हूँ. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल एम्प्लॉयज डेटा को एग्जाम्पल सेट करके, ऑल एम्प्लॉयज मीन्स के सारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी साइट्स पे हैं, उन सबका डेटा मेरे पास एक फाइल में गिवन है. तो बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मेट मैं इनको भी उसी तरह कंसिस्टेंटली सेट करूंगा. सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा ये जो एशफोर्ड की फाइल गिवन है उसका ऑर्डर क्या मेरे ऑल एम्प्लॉयज डेटा के साथ मैच कर रहा है, हम उसको देखेंगे. सो ऑल एम्प्लॉयज के अंदर आ रहा है पेरोल नंबर, गिवन नेम, फैमिली नेम. एशफोर्ड में आ रहा है पेरोल नंबर, साइट, जॉब कोड, कॉन्ट्रैक्ट आवर्स. ठीक है, सो द ऑर्डर इज डिफरेंट. सो मैं इस ऑर्डर को मैचिंग दी ऑल एम्प्लॉयज डेटा उस तरह मैच करने की कोशिश करता हूं. So I need family name and given name and family name. So given name and family name, I am going to cut and I will insert it here. So given name, family name, then I have site. I don't have site here. I have the address of the employee, the city, town, postcode, date of birth, date of employment. Okay, fine. So site और job code जो है, contract hours मेरे पास उस फाइल में नहीं है. I'm going to cut this from here or insert it here. So I've got given name, family name, date of employment. यहाँ पे date of employment यहाँ है, फिर date of birth है. Sorry, date of birth is going to be cut and I will place it here. So more or less ये उस फॉर्म में आ गया या उस सीक्वेंस में आ गया जिस सीक्वेंस में मेरे पास ऑल एम्प्लॉइज डेटा है. ठीक है, और मुझे ये याद है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज मेरे पास ऑल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साइट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब कोड्स होनी चाहिए. सो जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, अगर मेरे पास 3 टेबल्स होंगे तो हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आई विल मेक in order to link those? How many? बताएं. सर, दो. कितने? दो. Two, तो right? So if you have 3 tables, they are going to be 2 relationships, and 2 relationships are more than enough to link 3 tables. ठीक है. So either the information of the employees should be added into my jobs file or my site file, or the information of job should be included in my employees file or the site file, or the site information should be included in my employees file or job file. ठीक है, इसी तरह करते हैं ना. तो आप ये देखो कि मेरे पास ये जो एशफोर्ड की फाइल है उसके अंदर मेरे पास साइट और जॉब कोड, क्या वो दो ऐसी फील्ड्स नहीं हैं जिनसे मैं इनका रिलेशनशिप साइट और जॉब कोड्स के साथ बना सकता हूं? यस और नो?
Can I not do it? बताओ जी, खामोश क्यों हैं? Boys, all of you can hear me or not? I guess it is slow connectivity, so I will just go on since this is also locally recorded. That my all employees, or let's say the Ashford, it has site and job code column given, which can be used later on to link my site and the job codes file. Is that so? Yes, sir. साइट Yes, sir. मेरे पास साइट जो है वो प्राइमरी की बन जाएगी, यहाँ की साइट जो है मेरे पास फॉरेन की बन जाएगी। इसी तरह जॉब कोड जो है वो मेरे पास प्राइमरी की बन जाएगी और यहाँ पे मेरे पास एज अ फॉरेन की आ जाएगी। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? मुझे वो इंफॉर्मेशन ऑल एम्प्लॉयज फाइल में शिफ्ट कर देनी चाहिए या मूव कर देनी चाहिए, सो दैट लेटर ऑन व्हेन आई हैव टू क्रिएट द डेटाबेस मेरे पास एक ही फाइल में सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। उसके लिए I need to sort my all employees, which is already done. Ashford वाली फाइल के अंदर मैं अगर आऊं तो इसको भी मैं सॉर्ट कर दूंगा बेस्ड ऑन माय पेरोल नंबर. So I will select the data, go to custom sort by payroll number and click on OK. अब मेरे पास पेरोल नंबर, गिवन नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑल एम्प्लॉयज डेटा में ऑलरेडी है. ठीक है ना? पेरोल नंबर, गिवन नेम, फैमिली नेम, सीट एड्रेस, सिटी, टाउन, पोस्ट कोड, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है. आई जस्ट नीड द साइट, जॉब कोड एंड कॉन्ट्रैक्ट आवर्स. मुझे ये तीन अपने ऑल एम्प्लॉयज में चाहिए. सो मैं आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. And since I have sorted the all employees and the Ashford, they are going to have the same order. दोनों को मैंने alphabetical order में sort किया हुआ है, so I don't have any problem in terms of the order of this. Do we follow this? जी सर जी. अच्छा, अब अगर मैं ऑल एम्प्लॉयज को स्क्रॉल करता हूं नीचे तो यहाँ पे देखो ये बी से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स कि मेरे पास जो डेटा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है दैट इज कंप्लीट. एशफोर्ड जो है उसके इतने ही बंदे हैं और उसका डेटा मेरे पास सारा एक फाइल में प्रेजेंट है. So I don't need the Ashford site job codes now. I will just close it and don't save it. Coming down to my second site, which is the Bolton site. Bolton site में भी मुझे ये वाली information चाहिए, site, job code and contract hours. So very first thing that I need to do is I will select the data and I will sort it alphabetically. Sort by payroll number on OK. And then I will just copy the site, job code and contract hours. Copy this information and paste it in my all employees. So we have
this for my Bolton employees. यहाँ पे देखो payroll number is now CA, so probably my third site. So Bolton, all information is being put into one file. I can close the Bolton site, move on to Cardiff. Cardiff के अंदर भी सबसे पहला काम क्या करना है? I have to sort this file alphabetically. Custom sort, payroll number, like this. Site, job and contract hours. I'm going to copy this information and paste it in my all employees file. And last location is Dundee. I'm going to do the same process. First, I'm going to sort it into alphabetical order based on the payroll number, and then copy the site, job code and contract hours into my all employees information. ठीक है जी. Now all employees information is present in one file. Also don't need this file, so I'll just close it. Now what do I have? I have all employees personal information, I've got the job codes, and I've got the site. Are we clear up till here? Yes, sir. Yes, sir. The very first thing that I need to do is job underscore code, same format, contract hours underscore, like this. So all the fields have a consistent field name, meaningful, short, no spaces. तीनों files के अंदर कर चुका हूं. Now I need to make the data dictionary. Data dictionary, they say that you have to create this in your evidence document. Evidence document is basically a Word document, so I will create a Word document, a new blank file. This is my data dictionary. The very first file I'm going to have is the employee table. So you are to label your table like this, and then you are to insert a table with 4 columns. सबसे पहले उसमें क्या होगा? Field names. फिर क्या होगा? Data type. फिर क्या होगा? Field size. फिर क्या होगा? You can say format. You can also say metadata. You can also say other data. अच्छा जी. Now coming to the employees file, I will just take my, now this is just being more efficient. I can type these field names as they are, or
I can just simply copy paste them. For copy pasting, उधर क्या है, उधर रोज में मुझे लिखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही रो में है, different columns में है. So I need to first transpose this. So I will take these, copy them, and paste them here, and also transpose them. So यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इनको पेस्ट कर लेता हूं, like this. ठीक हो गया? So I've got all the field names. Now the data type. For this, I need to look at my data and assign a particular data type for all of them. Payroll number के लिए क्या data type होनी चाहिए? Text. ठीक है? You can just write text or you can also write short text. Given name, short text. Family name, street address, city, town, postcode, all of these are short text. Date of birth क्या होना चाहिए? Date of employment, date of time. Date. या साइट के लिए क्या होना चाहिए? शॉर्ट टेक्स्ट. जॉब कोड के लिए शॉर्ट टेक्स्ट. कॉन्ट्रैक्ट आवर्स के लिए do we all follow this? Sir. Yes, sir. Coming to field size. अच्छा जी, field size के लिए you have to look at again your data, and if you see some similarity you can mention that in your field size. You don't have to necessarily do it for all the fields, you just have to do with the ones which are consistent or let's say the same. So for instance, payroll number मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स का एक पेरोल नंबर है, और in order to check all of them I can do what? I can insert a column here and I will equals to length of this, that tells me the 7 characters. मैं इसको replicate करता हूं and then I will just look at the characters. तो सारे क्या हैं? 7 characters हैं, ठीक है. So my field size, although this is termed as short text, I can type in 7 characters. Given name सबका different है, family name सबका different है, so आप इसको ignore कर सकते हैं. Street address different है, city town different characters हैं. Wherever you see a consistency in the number of characters, you can specify the number of characters for that particular field. Field size जो है वो आप उसका उतने characters लिख सकते हैं. So this is 8 7, right? So this is also not consistent, so you don't have to mention this. ठीक है. Dates के लिए you are not supposed to give any number of characters. Site again, it is very much similar to the site or town, ठीक है, I'm not going to mention. Job codes, ठीक है, job codes के लिए I think they are all 2 characters. Right, all of them are 2 characters, ठीक है. So I can mention 2 characters for the job code. Only if they are consistent, only if they are the same, then you are supposed to mention it. Otherwise, leave it blank.
When you get to the last column, which is format or metadata, format and metadata is actually means additional data, other data. ठीक है, इसके अंदर आपने क्या क्या इंक्लूड करना है? इसमें आपने चार चीजें इंक्लूड करनी है. वन, if that field is going to be a primary key, mention that. If that key is going to be a foreign key, mention that. If there's going to be a validation applied, mention that. If there's going to be any input masking applied, mention that. Do we all get this? Yes, sir. पेरोल नंबर क्या बनेगा? पेरोल नंबर मेरा क्या बनेगा? प्राइमरी की बनेगा. If I think this is going to be my primary key, I can also check it. Come back to my payroll number, select it, the whole column. In the home tab, I'm going to go to conditional formatting, drop it down, highlight the cell rules. Now I will click on duplicate values. So if I do it, if there are any duplicates, they are going to be highlighted. So इसको select कर लेते हैं. Okay. And then just scroll down. So I can see that there is no payroll number which is going to be, or which is actually repeated. So that means that this field can be my primary key. ठीक है. और अगर मैं सारे जॉब कोड्स को देखता हूं ना, तो there is one similarity that I see. That is, the first two characters are text, the next four characters are numbers, and then the last character is also text. तो मैं इसके ऊपर ये भी लगा सकता हूं. Do we get this? जी सर. ठीक हो गया. गिवन नेम, फैमिली नेम के लिए मुझे कोई वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. जॉब कोड के लिए 1, this is going to be my foreign key. 2, input mask as double L. ठीक है. Site is also going to be my foreign key. I don't want to, or I should not be applying any input masking or validation onto it. So anything else that I see, okay, I said that this includes the format, metadata, additional information, other data. So everything needs to be there. For date of birth, I can have the format as double D, double M, 4Ys. So this is the format which I'm going to follow for my date of birth. Same goes for the employment, right? Other than that, you may also specify the format in terms of the data type. जैसे कि हमारे पास जैसे contract hours है, मैंने यहाँ पे ही इसको integer लिखा है. Rather than stating it here, you just mention the data type as number and the format can be written here. So do we all get this? Yes. Okay, so this is done for my employees table. Similarly, I'm going to make one for my site table. Okay, just copy this table over here and remove this piece of information and then come to my site. Site has these fields. I will take them, copy them, transpose them.
copy this list, come to your table and paste them here. This is repeated, so I'm going to remove it. And these cells are not read, so move these. Now, site, short text, short text, short text, all are short text. So this is short text. This can be just text as well, does not matter. You may even write alphanumeric if you want. That's about it. Fax number and telephone number. Let's look at the characters for telephone number. They are 9. This is also 9. And what about this? So both of them are 9 characters. So I can write 9 characters and 9 characters. This done. In this is my primary key. You can also check the duplicates if you want. For office and telephone fax number, I can have the input mask. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक हो गया. Last of all, job code only has, I think, 2. So one is job underscore code and one is job underscore description. Short text, job code, field size, 2 characters. This is going to be my primary key. I can also have the input mask as this. Yeah, that's about it. So this, what you call, is the data dictionary. Now you tell me, just by looking at this information, can I not make my database? Hanji. Will I be able to create my database based on this information? जी सर. ठीक है. So this was the solution to your first. Question number 2 says, in a spreadsheet application, prepare the data for importing to a database. Use formulas to add the jobs information to the employees information. I've already done it based on copy pasting. वो जो मैंने all employees की फाइल जो है वो बनाई थी.
और मैंने एक मेथड इस्तेमाल किया जिसमें मैंने डेटा को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन जो है ना एक ही फाइल में जाके रखो, राइट। सो वो प्रोसेस जो मैंने कॉपी पेस्टिंग के थ्रू किया है, दैट प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू यूजिंग द वी लुकअप। और वी लुकअप करके आप डिफरेंट साइट्स को रेफर करके तो अपना साइट की इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट आवर्स की इंफॉर्मेशन और जॉब कोड की इंफॉर्मेशन ऑल एम्प्लॉय की फाइल के अंदर डाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 जो है ना, वो एक्चुअली वही है जो मैंने कॉपी पेस्ट करके किया है, लेकिन क्योंकि इसके मार्क्स हैं सो ऑब्वियसली कॉपी पेस्टिंग के तो 12 मार्क्स नहीं हो सकते। यू हैव टू यूज एन एक्सेल फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज वी लुकअप। सो देयर वर 3 फील्ड्स जिनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एक स्प्रेडशीट में चाहिए। सो यू विल अप्लाई वी लुकअप इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है। वी लुकअप लगाने से फ़ायदा क्या होगा? वी लुकअप लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो रिगार्डलेस कि वो पेरोल नंबर आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इफ़ यू हैव रेफर्ड टू द राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, so it will automatically pick all the information and paste it there. So do that using VLOOKUP. Point number 3 says create a database named this and import the data. So you are required to create the database, import these 3 files, और जब आप ये करोगे तो इसके 12 मार्क्स हैं। सो 12 मार्क्स का मतलब ये है कि तीनों टेबल्स के 4-4 मार्क्स हैं। सो एक तो टेबल इंपोर्ट करने पे आ गया, एक उसके डेटा स्ट्रक्चर पे आ गया, एक उसके इंफॉर्मेशन पे आ गया। ठीक है, और इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा शीट व्यू का आपने एक साथ में स्क्रीनशॉट डाल देना है, और एक आपका जो आ गया वो आ गया किसका, रिलेशनशिप्स का। ठीक है। सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट you get 12 marks. And then point number 4 is about the piece of information required. ठीक है, just by the looks of it, it seems to me a cross tab report. So after data import आपने ये cross tab बनानी है। Now right now I'm going to stop here. In the next class I will proceed and continue this paper till we get to the exact requirement. मैंने आपको verbally बता दिया कि क्या क्या process है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, the lecture is recorded, I will share it with you, you can review it again if you want, and from this point onwards we are going to import the database tomorrow, take the appropriate screenshots and then make the report, and then it will be finished with the first normalization task. Clear on this? जी सर। सर मैंने एक सवाल पूछा। जी पूछे। सर वो ऑल एम्प्लॉयज में एक वो सिटी और टाउन में भी वो सेम लिखा होता है डाटा और साइड में, तो वो सिमिलर नहीं हो जाएगा रिपीटिंग? अगर नॉर्मलाइजेशन के परस्पेक्टिव से देखोगे तो यस, बट अगर मैं उस तरह बात करूँ ना सिंपल डेटाबेस के लिहाज से, तो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली लिंक्ड डायरेक्टली विद द एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई की जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए तो एम्प्लॉई के एड्रेस में सिटी टाउन तो होगा। ठीक है, साइट तो हमने इसलिए ऐड की एज अ फॉरेन की बिकॉज दिस इज द फील्ड विच इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद द साइट फील्ड। बट येस यू आर करेक्ट, अगर तो यहाँ पे सिनेरियो होता नॉर्मलाइजेशन का, और देन द साइट एंड द सिटी टाउन कोड, सिटी और टाउन is actually getting repeated, so I will just include one instead of two. ठीक है, लेकिन उसको ज़रा हमने थोड़ा सा कॉशियसली करना होता है, इसलिए अभी ये नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ नहीं है, बट वेरी नाइस ऑफ यू टू पॉइंट इट आउट एंड यस यू आर राइट। लेकिन आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि नॉर्मलाइजेशन होती तो फिर हम ना करते। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो तो मैंने आपको ट्वीक करके तो बता दिया कि यार ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके अंदर नॉर्मलाइज भी करो। ठीक है, नॉर्मलाइज करना नहीं है। इसका जो परस्पेक्टिव था दैट वाज अबाउट क्रिएटिंग द डेटा डिक्शनरी एंड देन बेस्ड ऑन योर डेटा डिक्शनरी इंपोर्ट द डेटाबेस, create the database and then form the report. Clear on this?
सर, थैंक यू। चले, आई विल सी यू गाइस टुमारो सर इंशाल्लाह। अटेंडेंस मार्क होगी? जी, अटेंडेंस मार्क होगी? हो जाएगी अटेंडेंस, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।